Hi everyone, welcome back to our podcast Uncomplicate with Urvashi. And Radhika. So I hope you all are doing well. Today, Radhika, we are going to talk Yeah. about how Bollywood has changed, how Indian cinema Exactly. from then to now. Yeah, it's one of the trending topic right now that is going on. Oscar May, I think Tollywood has won that award, RRR. RRR. So we yes. thought of like, why not talk about that? Why Bollywood is actually not able to give any such movie after Lagan Yeah. or Slumdog Millionaire bhi kahin na kahin. Hmm. It was a Hollywood movie only. Yeah. So why Bollywood is not able to do that anymore? Because पहले बहुत अच्छी movies थी. Yeah. And that day you were only discussing this thing with me that पहले के जॉनर और अब का जो जितने भी स्क्रिप्ट राइटिंग है या सब कुछ है इट हैज चेंज्ड. राइट. सो अगर हम बात करें इंडियन सिनेमा की, इंडियन सिनेमा ने राधिका हमें बहुत अच्छी मूवीज भी दी हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लुएंस दैट इंडियन सिनेमा हैज ऑन इंडियन सोसाइटी, इट्स वेरी डीप. उस टाइम की मूवीज और आज की मूवीज में इतना ज्यादा डिफरेंस है. व्हाट डू यू थिंक? यार आई थिंक इट्स अ डिफरेंस ऑफ पीपल. इट्स अ डिफरेंस ऑफ कल्चर एंड द वैल्यूज. आज के टाइम पे ना बॉलीवुड सिर्फ एक बिजनेस रह गया है. एक पूरा कट करके ना जब स्क्रिप्ट बनती है ना, जब कोई मूवी बनने जा रही होती है तो पहले ही उसमें से निकाल दिया जाता है कि इतना इन्वेस्टमेंट होगी, इतना प्रॉफिट होगा. उसमें क्या इमोशंस है, क्या स्क्रिप्ट है, अब उसको ना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है. राइट. सो आई थिंक तेरा जो जवाब मतलब क्वेश्चन है मेरे से, मैं तो यही बोलूंगी कि भाई एक चलता देखता हुआ धंधा बन चुका है, कमर्शियलाइज हो चुका है. एग्जैक्टली. कि आजकल के हमारे जैसे पेरेंट्स का एक क्रेज था पहले जमाने में हमारे कि मूवी आ गई है, दे आर गोइंग एंड मूवी देखने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन की. और पहले ये भी तो होता था ना कि एक साल में 10 या 12 मूवीज रिलीज होती थी, बट नाउ there are 100 movies coming in bulk together and only two of them are bringing meaning to into our lives. Exactly. So I think this is one of the most major things जो हमें समझने की जरूरत है. that पहले की movies में राधिका, when people used to go to the theater, they used to bring something back with them, some kind of moral value, some kind of meaning, they knowledge, talk information about something after watching a movie. ये मूवी देखने के बाद ना एक अलग ही डिस्कशन चल रहा होता था कि यार उसमें ये कितना अच्छा था. जैसे आज की मूवीज में अगर हम कुछ अच्छी मूवीज उठाकर देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी द केरला स्टोरी देखी है. After that movie, I was actually able to interact with my parents and talk about, because we went together. We were able to talk about the information that we gained. And Dear Zindagi जैसी movies, लज्जा जैसी मूवीज, जो सोशल इश्यूज पे जो आर्टिकल 15 थी. अग्रीड यार. राइट. ऐसी मूवीज में हम लोगों ने कुछ ना कुछ हमेशा बाहर निकल के उस मूवी ने हमें सोचने पे मजबूर करा है. जो कुछ लोग हैं ना, इन लोगों ने ना एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया कि हम गरीबी दिखाएंगे या तो बहुत ही लग्जरी दिखाएंगे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर. राइट. तो मूवी ग्लैमर होगी, उसमें सेक्स सीन्स होंगे, अपीलिंग सीन्स होंगे. एग्जैक्टली. लाइक अभी आई वाज आस्किंग यू कि व्हाट डू यू थिंक दैट स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखने के बाद you learned? What did you learn? You learned nothing. I think they are just trying to copy Hollywood. And I don't think so they are able to understand this thing. This is not a Hollywood audience. Yeah. Hollywood audience have different set of rules, different set of lifestyle. But over here, we live with our family. There's a culture we follow, the values, the traditions. But I don't think so they are any more over there. जो मैं पहले बोल रही थी कि हम लोग मूवीज जब आज देखने जाते हैं, if we pick movies like जैसे अभी अनन्या पांडे ने कुछ मूवीज करी हैं, there are movies that are coming and there is no story. जैसे अभी तूने मुझे बताया था आयुष्मान खुराना की कोई एक्शन हीरो आई थी. तो there some movies they're not just bringing what is needed on the table. And in fact ठीक है, आप मॉडर्न सोसाइटी दिखा रहे हो, बट आप ये समझने की कोशिश करो दैट दिल्ली एंड मुंबई एंड बैंगलोर के अलावा और भी ऐसे हमारी कंट्री में स्टेट्स और सिटीज हैं जहाँ पे पीपल आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद दैट काइंड ऑफ कल्चर. जैसे अभी तू झूठी मकार में दिखाया है, वो तो उनको पता ही नहीं है. बिकॉज दे हैव बिकम, जो आजकल की जो जनरेशन और यूथ आ रही है, जो यूथ हमारे करीना कपूर, करण जौहर जैसी जो जनरेशन आगे गाइडेंस जो यूथ को दे रही है, दैट गाइडेंस इज नॉट मेकिंग दैट कॉन्टैक्ट. वो एक कनेक्शन नहीं है बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द यूथ दैट इज कमिंग नाउ. Teachers, what are they giving to the next generation? आज की generation that there is no connection because they are born and brought up with a silver spoon. Like Sonam Kapoor said in an interview that it's not my fault that I'm born and brought up with a silver spoon. I'm Anil Kapoor's daughter. So, oh my God, that's good. So it's just they don't
know what it feels like to be poor, what it feels like to be There's a suffering, debate. you know. एक ना डिबेट है कि नेपोटिज्म, नेपो किड वाला, Yeah. एंड कुछ मतलब कुछ प्रोज बोलते हैं, कुछ कॉन्स बोलते हैं, बट एज यू सेड बिफोर दैट कि एटलीस्ट जब जैसे माय डैड इज अ बिजनेसमैन, एंड देन इफ ही वांट्स मी आल्सो टू एंटर दैट बिजनेस, आई थिंक आई विल हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल करने के लिए ना मुझे आई हैव टू एक्चुअली पुट माय स्टेप डाउन and learn those things. Right. And I think we are doing that in our real life also. Yeah, but these people are actually these nepo kids are getting everything on plate, saying कि चलो एक मूवी फ्लॉप हो गई तो कोई नहीं, It's okay, you know. दूसरी आ जाओ, Exactly. तीसरी आ जाओ. अर्जुन कपूर, बेचारी परिणीति चोपड़ा तो गायब ही हो गई है. You know, there was this theory I was researching about it, तो मुझे फैक्ट पता चला था ये कि जब आलिया भट्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, who was the biggest competitor of her? If you remember, करण जोहर के शो पे भी आई थी. I don't. परिणीति चोपड़ा. They उस time पे both परिणीति was, debuted yeah. at the same time, Yeah. and everybody remembered Pariniti. Why? Because she was a very bubbly and very raw actress. Yes. But if you see the kind of movie she started getting, those Yeah. all were very bad written. That one movie with Aditya Roy Kapoor जो चली ही नहीं. Then there was a खाने पर movie थी वो. with Ali, who's that guy who's a singer? अली जफर. जब जिसमें रणवीर सिंह भी था. हाँ. And you know वो भी नहीं चली थी. Exactly. तो मैं बता रही हूँ ये एक स्ट्रैटेजी है. How to make आलिया भट्ट को चमकाने के लिए actually उसके हाथों पे सारी अच्छी मूवी गई हैं. Highway she has not given one flop. How is it possible that she is getting all the good scripts? Suddenly after Student of the Year, जहाँ पे उसने कोई इतना कुछ छाप भी नहीं छोड़ी, but परिणीति चोपड़ा who has done 5 films who are right, biggest which hit. was good. Yeah, Ricky she was Bell, doing good. Or some that do you remember? Ishaq Zadeh. And suddenly she's getting all the bad movies, and Alia Bhatt आगे जाती जा रही है, and परिणीति is nowhere to be seen now. Right. You know, उसका पूरा career खराब. This is what actually Bollywood mafias do. Yeah. That how Ranveer Singh was given all the movies that were offered to Sushant Singh Rajput before. Right. And you know, it's sad to know that Sushant Singh was such a good actor. Somebody who has done MS Dhoni. I mean, can you believe that he only got what? He only did 7 movies in his career. 7 to 8 movies, which doesn't make any sense. Why was he not? छिछोरे जैसी मूवी को यार आप अवार्ड नहीं दे रहे हो, बट आप कौन सी अभी एक मूवी आई थी? Right, what you are saying, but also when there's a new actor, when Yash Chopra and all that production launches any actor, they sign a contract of 3 movies and they ask for royalty. जब इन 3 movies के बाद आपने आने वाली 10 movies तक आप अपनी royalty जो profit कमाओगे उसका 10% production house को जाएगा. So basically production house owns these actors. So this is how this business runs. So when he signed Sushant Singh Rajput, when he did that movie Kai Poche, he signed 3 movies with Yash Chopra production house, and he also got offered for Sanjay Leela Bhansali, Ram Leela, but he was into the production के उस contract में that Karan Johar said कि no, you can't do it. And Ranveer Singh के पास गई वो movie. And is that Ranveer Singh is actually a second cousin of Sonam Kapoor, and he has many good contacts in the industry. He's not a normal Delhi boy who has come and stepped up. It's how the PR works. How the PR in today's time we feel, oh my God, these are Delhi people. Actually what I feel is, Radhika, that what we are shown is very less, and what is actually happening behind the reel is something that we are blindsided by. Because मेरे को नहीं पता रणवीर सिंह कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ से आया है, या सोनम कपूर कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ से आई है, बट मुझे ये पता है कि सोनम कपूर अनिल कपूर की बेटी है, तो कहीं ना कहीं उसको एडवांटेजेस मिले हैं. सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने एक इंटरव्यू में बोला था, उसके साइड में अनन्या पांडे बैठी थी, एंड शी सेड कि मेरे फादर ने कितना my father doesn't goes to Karan Johar's show. He has never come to Karan Johar's show. He's never bought a Karan Johar movie. He has also really suffered and he has struggled a lot. And उतने में ही सिद्धार्थ चतुर्वेदी was like, yeah, of course, and जहाँ पे इनका struggle खत्म होता है, वहाँ पे हमारी जहाँ पे इनके ड्रीम्स, हाँ, जहाँ पे इनका स्ट्रगल शुरू होता है, वहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं. तो like, can you, like, he was on the face. So you एक मूवी मिल जाए, we are famous. हमने कर लिया. You will notice, Radhika, that people like Kriti Sanon, people like Anushka Sharma, people like Siddharth Chaturvedi, people like Sushant Singh Rajput, Priyanka Chopra,
you will see it when they're talking about their struggles, that they have actually come And from nowhere. that Parineeti thing is happening with which heroine right now in the industry? Guess. Alaya? No, Alaya's getting good movies. That is happening with Kriti Sanon. All the good movies of hers is actually going to Janhvi Kapoor. Janhvi Kapoor is new Alia Bhatt of the industry. Look at her. And Kriti Sanon, achanak she's getting vanished. Exactly, she's going for low budgeted movies with new directors. But one thing is there, that if you want to survive in Bollywood, you need to have good connection with these mafias, because somewhere ये directors को भी सारा rule करा जाता है profit making way में, कि यार वो producers हैं, उनके पास पैसा है, अगर आपको काम चाहिए तो आपको इनसे बनानी पड़ेगी. So maybe I think that is the reason कि आज ना audience को पसंद नहीं आ रहा है Bollywood. And Bollywood का एक नया जो trend आ चुका है boycott Bollywood, वो इसीलिए ही आया है क्योंकि we want this mafias to stop ending these things, क्योंकि आप ये negatively कर रहे हो. You remember? I remember Kangana was that first person on Karan Johar's show who said that you are a flag bearer of nepotism and mafia, movie mafia. And I remember, yeah, Kangana Ranaut, when she came out with that thing of Hrithik Roshan, I was like that Rajat Sharma show, if you have seen, कि वो मेरी पार्टी में फिर क्यों लेट के नाच रहा था, अगर मेरे बारे में कुछ नहीं है. And she accepted this fact कि हाँ मैंने love letter लिखे थे, I had an affair, but how I was being portrayed, अकेले मैंने तो नहीं करा ना. He was also शादीशुदा. He should have also, but this is what it is, yaar. This is very normal. She was the first person who came out with all these things. Right, and she's now seen nowhere actually. There's good things also about Bollywood, but in today's time, we will come to that. In today's time, na, I don't see any good thing happening. See, the thing is that Bollywood ने काम अच्छा करा है in the past years, but now what we are seeing is that there are no meaningful movies. There's no connection with the audience. Root level पे जो चीजें हो रही हैं वो Bollywood industry के जो again जैसे राधिका ने बोला mafias. I would not like to take that name, but I would say people who are at the balcony seats of that industry, they don't know how to connect with the lower ground people. They don't know because they don't know the struggles anymore, and they don't want to know. So coming back to this point, Urvashi, that अब नेगेटिव चीजें इतनी ज्यादा क्यों सामने आ रही हैं? बिकॉज रिसेंटली ना 3-4 चीजें लगातार जो बॉलीवुड में हुई हैं, वो एक तो ये ड्रग केस, जिसमें इवन दीपिका पादुकोण चैट वर रिवील्ड. Bharti, imagine someone from Kapil's show. But ठीक है, चलो, that is their personal life. Of course. But when I feel when you are holding a place where you can influence a lot of people, and there are young girls, boys, जो आपको देखते, मैं खुद I was a Deepika fan. But when I got to know that, okay, this is also a part of her life, I felt like, okay, I can also do, आप influence होते हो कहीं ना कहीं, and I feel somewhere you are responsible. Because again, you are putting them at a place of a role model. You are looking up to them. Yeah. And in fact, researchers have proved that kids, our youth, इतना अपने neighbors या friends को देखकर, अपने parents या relatives को देखकर influence नहीं होते, जितना ज्यादा वो ये जो स्टारडम में जो हमारे आर्टिस्ट्स हैं जो बैठे हैं, जहाँ जो हमेशा कोई ना कोई मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस ऑल्सो नाउअडेज इतना ज्यादा स्टाइल आइकन्स, फैशन आइकन्स जो हैं वो तक हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री से लिए जा रहे हैं. सो इवन दोज गर्ल्स हु आर ओनली मेड फॉर मैगजीन शूट्स, ओनली मेड फॉर स्टाइल एंड फैशन आइकन्स, दे आर ऑल्सो डूइंग मूवीज wherein they don't have that talent. They're not taking the film as, okay, I'm an artist, I have to be this character. आजकल की लड़कियों में ना वो बात नहीं रही, जिसमें तुझे उस दिन बोल रही थी ना कि यार आजकल की जो लड़कियां, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सुहाना खान तो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है, she has grabbed the ambassador of Maybelline. So I feel like आजकल की लड़कियों की ना पूरी फिल्म निकल जाती है, एक्सप्रेशन एक भी नहीं होता. और पहले की आप कोई मूवी, श्रीदेवी की मूवी उठा के देख लो, उसके एक सीन में आपको रोना आ जाएगा. when there's an emotional scene going on, रोना आ जाएगा, and you will be able to connect so much in that one scene. That one scene compared to Janhvi Kapoor's one movie. We want to come to the positive things also, because recently, COVID से पहले, there were actually good movies. Good movies that I used to look up to. अब तो बिल्कुल भी नहीं है. पिछले एक साल में I think Radhika, the only movie, Rocketry, was the movie I really loved. Mission Majnu was good because उसमें again we have a Tollywood actress, and
भूल भुलैया 2 ऑफ कोर्स कोविड से सब परेशान होकर निकले थे, तो इट गॉट हिट बिकॉज ऑलरेडी अक्षय कुमार ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा हुआ था हम पे भूल भुलैया 1 से. सो Kartik Aaryan, has fans, and then Tabu is there, of course, and Kiara Advani is a good actress. She's doing well. So the movie was fun. It was very refreshing, so it went good. Otherwise, अभी केरला स्टोरी आई है, उसके अलावा मुझे कोई और मूवी पता ही नहीं है जिसको मैं खड़े होकर बोलूं कि वो I wanna give a standing ovation. That's fun movie भी नहीं आ रही है इस टाइम पे तो. Yeah, like movies like चाचा 420, चाची 420 and भागम भाग and फिर हेरा फेरी. पार्टनर कितनी अच्छी मूवी थी गोविंदा और सलमान खान की. Have you seen that video जहाँ पे Tiger Shroff is singing a song and वो घूमता है and he farts? Oh my God, yes. Yeah, I don't know, it's not related to it, but it is so funny that whistle बज जाती है उसकी. इससे मुझे याद आया, I think Shraddha Kapoor is the only girl I would stand up for today. When it comes to positive things, impact that Bollywood has left on Indian society, the first thing would be that Radhika, intercaste marriages, cultural changes हमने बहुत देखे हैं. Parents and बच्चों के बीच में जो एक relationship, girls freedom बहुत देखी है, लड़कियों के लिए freedom. Then हमने social issues बहुत सारे एड्रेस होते हुए देखे हैं. हमने आर्टिकल 15 देखा है, caste system abolishment. Then we have seen NH10 where we know that what is the reality in Haryana in romantic marriages. We have seen Pink में there was a great social message that no means no, which thappad, because we can see that there was domestic violence going on, rape was going on, and a lot of times eve teasing जिसपे people are not able to say no, and even if they are saying no, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि what exactly dignity means. आज के टाइम पे पंजाबी इंडस्ट्री में मैं बात नहीं करी, बट पंजाबी इंडस्ट्री की मूवीज उठा के देख ले, जट, जूलियट, and they are so nice and they are meaningful. Like either it's good comedy or it's good stories. True. Right. So coming to choose the wisely. End, yes. Yeah. And coming to the end of our podcast, I hope you guys liked our talk about Bollywood, Tollywood, everything in together. So give more power to movies like Dangal, movies like Dear Zindagi, movies like Mary Com, movies like MS Dhoni. So if you guys have any question, comments or any suggestion for us, you can please comment below and tell us about it. Also, you can go to our Instagram handle where we are always available. And we have a Gmail ID. So if you want to connect personally, anonymously with us, that is also available. Exactly. So take care, guys, and we will come with a blasting new episode next Tuesday. Don't go anywhere and keep watching us. Bye-bye.